Namaste Saraswati Devi Anipacharare Devi Sesha Shunyavadi Paskajadi Om Agnati Mirindasya Gyanagar Chaksuan Militam Gena Tasmai Sri Chaitanya Manobhistam Stapatam Gena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Darati Teham Sri Guru Sri Dita Kamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagradatam Sagaragatam Nitam Sam Sadevam Sadvaitam Savrudam Varadana Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakanitamsta Hey Krishna Karuna Sindhu Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Kanchana Gaurange Radhe Vrindavane Radhe Ishavana Siddhdevi Panchakopa Kripascha Kripasindhya Bhajita Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare. So we are continuing with the Darshan, San Francisco, June 1971. तो हम सैन फ्रांसिस्को के जो दर्शन है उसी को हम वापस दोबारा जारी रखेंगे जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे उनको Srila Prabhupada was discussing about the four types of sannyas. श्रील प्रभुपाद उसमें चार प्रकार के संन्यास के जो स्तर होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे. So, just to review, Kuchicha means cottage. तो जो चार प्रकार है उसमें सबसे पहला जो स्तर है वो है कुटीचर. So he goes out of the village. This is the way it was in days of yore. तो वो जो है अपने गांव से बाहर रहता है. And his wife brings him prasad. और उस पहली स्थिति में पहली पोजीशन में जो है उनकी पत्नी होती है वो उनके लिए प्रसाद लेके आती है कुटीचर. Home supplied. That's Kuticha. वो है कुटीचर. He has no connection with family life other than the prasad. और प्रसाद के अलावा उसका घर से कोई संबंध नहीं होता. Then, after that, he gives up he cuts. और जो है अगला जो स्तर होता है जो दूसरा स्तर है उसमें वो अपने घर से हर संबंध को काट देता है. And then he depends on the villagers, they begin bringing him prasad. और फिर जो है वो गांव वालों पे निर्भर रहता है जो उसके लिए प्रसाद लेके आते हैं. That is the Bahudak stage. वो है बहुदक अवस्था. Bahu means many. बहु का मतलब है बहुत अधिक. Not accepting food from one place, but from many. तो एक किसी जगह से प्रसाद नहीं लेना लेकिन अलग अलग जगह से प्रसाद लेना वो है बहुदक. So now he's convinced, all right, Krishna's going to supply food for me. अब उसको लगता है कि अब जो है कृष्ण मेरे लिए प्रसाद जो है. So why shall I remain in one place? Let me preach. क्यों जो है मेरे को इसके लिए चिंता करनी चाहिए मुझे प्रचार करना चाहिए भगवान के. So that is called Parivrajakacharya, वो अब जो अगला स्तर आता है वो है परिव्राजकाचार्य. wandering all over. पूरे दुनिया भर में भ्रमण करना. So we see what a miracle Prabhupada is doing. His present is doing. देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार किया है. The sannyasis, new sannyasis are coming up like popcorn, a lot from Russia. तो सन्यासी जो है नए नए सन्यासी एकदम पॉपकॉर्न के भांति आ रहे हैं और ज़्यादातर जो है रशिया से आ रहे हैं. In your lifetime, you'll be seeing Chinese sannyasis और also. आप लोग अपने ही जीवन काल में देखेंगे कि चाइनीज संस्कृति है सन्यासी हैं. You guys are young enough, you'll see there's a political upheaval going on right now today in China. They're going to realize, hey, this dictator rascal, they don't say like that, but they're
purport is. This dictator rascal is ruining China. He's making enemies all over the place. तो अब जो है वहाँ पे लोगों को यह अनुभूति हो रही है कि नहीं, जो डिक्टेटरशिप अभी जो वहाँ पे है चाइना में, तो ये गलत है और ये जो है अपना पूरा He's losing control. He's losing control. तो जो डिक्टेटर है अभी का वहाँ पे वो You know what that means. हो रहा है लोगों के ऊपर। Jagannath. सबसे नेता है वो है जगन्नाथ। In your lifetime, probably not in my lifetime, you will see Jagannath Rath Yatra performed in Tiananmen Square. This in the central in Beijing. There's a huge public square. That's where Rath Yatra will be. Mark my prediction. महाराज कह रहे हैं कि ये मेरा भविष्यवाणी है कि बीजिंग जो चाइना का बीजिंग वहाँ पे मध्य में सेंट्रल स्क्वायर है, वहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। ये मेरा इसको आप लिख के रख लीजिए। On the 14th of August, 2020, I'm predicting there will be Rath Yatra in Tiananmen Square. It's a very famous place. तो महाराज कह रहे हैं आज मार्क कर लीजिए, अभी 2020 चल रहा है, तो टिएनमेन स्क्वायर एक बीजिंग में जगह है, वहाँ पे रथ यात्रा होगी। So the point is that the Asuric government is going to go down. तो तथ्य ये है कि जो असुरिक जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो गिरेगी। And as soon as there's an opening, Jagannath comes in. जैसे ही वहाँ पे दरवाजे खुलेंगे तो जगन्नाथ जी वहाँ प्रवेश कर जाएंगे चाइना में। And I believe I mentioned before that Chinese people are going to fall in love with Jagannath, Baladev, and Subhadra. तो जब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो चाइनीज लोग हैं वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से एकदम प्रेम में डूब जाएंगे। Yeah, Subhadra looks Asian. सुभद्रा जो है वो एकदम पुरातन सी लगती है। Harival. Lotus eyes, you know. She looks Asian. एशियन। Subhadra, yellow complexion, you know. तो They will identify her with her. एशिया की लगती है, तो एशियन ये लोग For many thousands of years, Chinese were into worshiping different kinds of idols, different kinds of gods in the form of, but all, of course, no substance to it, but maybe if they were lucky, they might get some benefit, but idol worship. तो बता रहे हैं कैसे जो है चाइनीज लोगों ने अलग अलग जगह जाके आगमन किया, और देखा कि सब जगह अलग अलग भगवान है, लेकिन वहाँ पे जो है उनका कोई तथ्य नहीं है, जो कई जगह जो है मतलब केवल मूर्ति पूजा चल रही है, तो वो लोग So they're going to take to deity worship like we say in America, ducks to water. वो लोग जो है विग्रह पूजन जो है वो If you have a duck, suppose you pick up a duck and set it down next to a lake. तो एक डक को अगर आप लेके जो है किसी नदी के पास में रख दो, Do you have to push it? Do you have to push it? तो उसको धक्का देना होगा आपको, नहीं देना पड़ता है। No, the duck automatically goes into the water. जो बतख है वो अपने आप ही पानी में जाती है, मैं उसको धक्का नहीं That's their comfort zone. तो वो I mean, they come out on land, but basically they're water birds. क्योंकि वो जो है पानी के जलचर हैं, तो इसीलिए उनको धक्का देने की जरूरत नहीं है पानी में। So that's the saying, like a duck to water. So Chinese are going to take the deity worship like a duck to water. तो जैसे एक बतख के लिए स्वाभाविक है पानी में जाना, उसी प्रकार जो चाइनीज भक्त हैं उनके लिए भी स्वाभाविक होगा कि विग्रह पूजा करें। Especially Jagannath, Baladev, and Subhadra, विशेषकर जो है जगन्नाथ बलदेव because they're closer to the type of idols they used to worship, तो So it's going to be very natural for them. जिस तरह के विग्रहों को वो लोग पूजा करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बहुत ही निकट है। The floodgates will open up. और जो है बाढ़ के जो द्वार है वो खुल जाएंगे। We see in Mayapur hundreds of Chinese devotees. Now they're really nice devotees. और हम देखते हैं मायापुर में आज भी इतने सारे जो भक्त आते हैं चाइना से, और बहुत ही अच्छे। But this year, the beginning of this year, with coronavirus, the Chinese were not allowed into Mayapur. और इस साल के आरंभ में जो है कोरोना आ गया था, इसी कारण जो चाइनीज लोग भक्तों को यहाँ अंदर नहीं आने दिया था। They were terribly upset about this, but of course they didn't have any choice, वो लोग बहुत परेशान थे इससे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। They were both angry and disappointed, but what could ISKCON do? We didn't have any choice, वे बहुत गुस्सा क्रोधित भी थे और बहुत दुखी भी थे, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकते। So, regarding sannyas, so Parivajakatarya everywhere and anywhere. परिवारकाचार्य जब आगे बढ़े संन्यास की स्थिति में, तो परिवारकाचार्य जो है वो कहीं भी और कभी भी चले जाते हैं। So the miracle that Srila Prabhupada is doing is
bypassing every other stage, lower stage of sannyas, bypassing. प्रभुपाद जी ने चमत्कार किया वो ये है कि जो सन्यासी जो अब बना रहे हैं वो सीधा दोनों जो नीचे कोटिजक बहुजक को This- दान करके सीधा जो है परिराजकाचार्य बना This is the tradition that was introduced by Bhaktisiddhanta Saraswati ये Thakur. जो संस्कृति है ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने हमारे Try to understand. में लाई थी। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was Maha-revolutionary, super-revolutionary. तो जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रचारक थे हमारे But संप्रदाय में। Prabhupada points out that in the definition of founder acharya can do things that regular guru cannot do. प्रभुपाद जी संस्थापकाचार्य की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि वो जो संस्थापकाचार्य है वो चीज़ कर सकता है जो एक सामान्य गुरु नहीं कर सकता। In a conversation, a 1977 conversation, Prabhupada made it clear that his disciples would become regular guru, not founder, not in the same league as founder acharya. तो प्रभुपाद जी ने 1977 के एक वार्तालाप में ये सही स्पष्ट रूप से बताया था कि जो अब आगे आने वाले शिष्य जो गुरु बनेंगे वे एक सामान्य गुरु बनेंगे वे संस्थापकाचार्य। And Bhakti True Swami formulated a detailed seminar on Srila Prabhupada founder acharya, in which he makes it clear what is the position of founder acharya. महाराज ने इसके ऊपर एक सेमिनार जो है बनाया कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है इस संस्था के संस्थापकाचार्य हैं। That's already been clearly spelled out. He's taking all the evidence from ये Prabhupada. बहुत ही स्पष्ट रूप से पहले ही दिया जा चुका है। So, indefinitely, the gurus in our disciplic succession will be regular guru. तो अब आगे जितने भी जो गुरु आने वाले हैं हमारी संस्था में वे सब सामान्य गुरु रहेंगे। They will not try to change Prabhupada's teachings because he's just like Ramanujacharya, just like in the Sri Vaishnavas, they have got their disciplic succession, but they're not trying to change the teachings of तो Ramanujacharya. आगे वाले गुरुजन भी होंगे वे लोग इसको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस प्रकार श्री वैष्णव में भी रामानुचार्य का जो स्थान है वो किसी ने परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। Anybody who tried to do that would be considered a renegade. You know, renegade? Runaway, bogus. तो अगर जो भी व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी की इस पोजीशन को स्थान को बदलने का प्रयास करेगा वे वो एक भूल There's है। another English word, travesty. Do you know travesty? Something terrible, abominable that should not be done is called a travesty. तो ये बहुत ही जघन्य मतलब खराब कार्य होगा यदि कोई ऐसा So it's unthinkable. They wouldn't even think about it. तो ऐसा ये बहुत ही गलत कार्य They're है। completely sold out to Ramanujacharya. तो जो श्री वैष्णव जो होते हैं वो लोग पूरा रामानुचार्य को उनको ही बात मानते हैं। So that's what Founderacharya can do. तो वही है जो यही चीज जो संस्था So the standards that Srila Prabhupada is currently, when he was on the planet, and now currently also has developed and is being maintained to a large degree in ISKCON, not perfectly, but to a large degree, is for the next 10,000 years. प्रभुपाद जब थे और आज भी ज़्यादा मुख्य स्तर पे प्रभुपाद जी जो है अभी भी संस्था के संस्थापकाचार्य को Haribol. बनाए रहे हैं। You know, you might be interested to know that some big corporate officer from IBM, some company like that, you know, has toured around to ISKCON temples. He has toured. तो महाराज कह रहे हैं कि आप लोग जान के बहुत अच्छा लगेगा कि IBM के कुछ बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर जो रहते हैं अध्यक्ष वही लोग आए थे ISKCON की टूर करने के लिए He's struck with wonder. और वो देख के एकदम चौंका। He said that ISKCON's program, as established by Srila Prabhupada, the regimen, is more regulated than many big corporations. और उन्होंने बताया कि ISKCON का जो ये संस्था है ये जब श्री प्रभुपाद ने स्थापना की ये बहुत रेगुलेटेड है ज़्यादा हमारे संस्था से जो हम ऑफिशियली ऑर्गेनाइज चला रहे हैं। Deity worship doesn't mean we haven't got our homework. Of course, we have our homework to do to upgrade. We have to keep upgrading. और हमें अभी भी बहुत कार्य बचा है जो हमें करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। I was very, very impressed, super impressed. और वो जो व्यक्ति जो आया था ऑफिसर वो बहुत ही Big shot, you know, CEO, maybe it was IBM, I don't remember the company. और वे बहुत चौंक गया था मास्टर मुझे याद नहीं वो कंपनी का क्या था। He said, wherever you go, whatever temple you go to, you can expect darshanarti 7:30. और भले आप दुनिया किसी भी सेंटर में चले जाएं वहाँ आप ये उम्मीद कर सकते हैं 7:30 पे जो है दर्शनार्थी होगी। 7:30 p.m. or around 7 o'clock p.m.
Sundar Arti. Sundar Arti. तो जो है शाम 7:30 बजे जो है 7 या 7:30 बजे संध्या आरती होती है। Prasadam around 9 o'clock. Regulated. So he was super impressed. तो वो जो है ये देख के एकदम खुश हो गया। Anyways, Paribhajakatarya introduced by Srila Prabhupada as, by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. तो ये जो परिव्राजकाचार्य है ये श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने हमारे मूवमेंट में लेके आए थे। Because there was not much like that before Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और उनसे पहले ऐसा हमारे जो संप्रदाय Things में were more in the old-fashioned way. पहले उनसे पहले ये नहीं था। तो उनसे पहले In fact, there was no institutionalized Vaishnavism. तो उससे पहले जो है ऐसा कुछ संस्था नहीं बनी हुई थी वैष्णवों की। Srila Thakur Bhaktivinoda, he introduced the Namahata programs. ठाकुर जो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उन्होंने हमारे संप्रदाय में नाम हट्ट के जो प्रोग्राम है वो लेके आए थे। But there was not so much in the way of a major core institution like Gaudiya Math. That was the work of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. नाम हट्ट भी जो थे वो कोई संस्था की तरह उन्होंने नहीं बनाए थे, क्योंकि संस्था का जो चीज़ है वो श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गौड़ीय मठ के रूप में लेके आए। And Srila Prabhupada's glorious success is that he was just following the model laid down by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So that's Parampara. प्रभुपाद जी की जो विशेष खूबी ये रही है कि उन्होंने यथारूप में जो श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने दिया है उसी को बना के रखा है यहाँ पे। That's Prabhupada's success. यही है प्रभुपाद जी का सिद्धि यही है। So Paribhajakatarya we'll see for the next 10,000 years. प्रभुपाद जी जो है संस्थापकाचार्य रहेंगे अगले 10,000 वर्षों तक। Well, we can watch from the spiritual world. From Goloka Vrindavan we can watch. हम लोग जो है जब गोलक वृंदावन चले जाएंगे तो वहाँ से देख पाएंगे। Everybody sitting here will be going to Goloka Vrindavan. There's nobody. But you have a choice. Either you go on the local train or Rajdhani. आपके पास लेकिन यह चॉइस है कि आप जो है लोकल ट्रेन से जाना चाहते हैं राजधानी। That much choice we have. इतनी चॉइस आपके पास है। Free will. तो अपनी जो है फ्री विल आप लोगों के पास है। That's why Prabhupada's always hammering every lecture, hammering. इसीलिए जो है हर प्रवचन में इस चीज को इतना बताया जाता है, बार-बार इस चीज को बताया जाता है। That's what we just previously read, how there's risk you can go all the way down in the species. इसलिए हमने पहले भी अभी पिछले कुछ दिनों चर्चा की थी कि कितना खतरनाक है कि यदि हम दोबारा पुनः नीचे। But there's so much special mercy in the holy name. लेकिन जो हरिनाम है उसमें इतनी कृपा है, असीम कृपा। I mentioned that we have our unique preaching program in the mouth. Unique preaching program. महाराज बता रहे पहले मैंने बताया था कि हमारे मुंह में भी जो है हम एक बहुत विशेष तरह का Each and every person that chants Hare Krishna is making millions of devotees. यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्णा का जप कर रहा है तो उनके मुख में मिलियंस बहुत सारे संख्या में भक्त बन रहे हैं। How do we know? Because on the bottle of Listerine mouthwash it says, kills millions of germs on contact. कैसे कह सकता हूँ? वो इसलिए कह सकता हूँ ग्लिसरीन की जो बॉटल आती है माउथ फ्रेशनर उसकी बॉटल में लिखा है कि it kills millions Full on devotees from germ.